ورشة شروش ورشة بالله ما موبايل ما لقى ما لقى دي Good morning and Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Feeling good? Okay, nice. Bache, first of all, I'm requesting you all that those students who are attending the class with their smartphone names like Infinix smartphone or iPhone, whatever, so kindly change the name of that and enter with your own name, class and section, so that we can mark your attendance. जो बच्चे अपने स्मार्टफोन के नेम से क्लास में इंटर हो रहे हैं तो काइंडली वो चेंज करके अपना नाम, क्लास और सेक्शन इंटर कर ले ताकि आप लोग की अटेंडेंस मार्क की जाए। या अगर नहीं कर सकते तो फिर कमेंट में अपना क्लास नेम और सेक्शन सेंड कर ले हमें, राइट? Okay, so are you ready for today's lecture? Raise your hand if you are ready. Shahir. क्या मतलब ये इसका प्रेजेंट क्या मतलब? Okay, coming towards our today's lecture, we will take start from this one line that is shown on your screen. Concentrate on your lecture, right? He always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them. He means who? Prophet sallallahu alaihi wasallam. He always prayed dua karna, always hamesha to Allah, Allah se, to guide ki unki rehnumai kare, people towards the right path, सीधे राह पे उनकी रहनुमाई करे and forgive them और उनको माफ कर दे, ठीक है? यानी जो कुफार लोग थे, जो मुशरिकीन लोग थे, तो उनके बारे में अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते थे। वो हमेशा अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनको सीधा राह दिखाने के लिए दुआ करते थे, right? The next one paragraph is, once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا ٹو ٹریول کہ سفر کریں ٹو دا سٹی آف طائف طائف کے شہر ٹو اسپریڈ پھیلانا کہ پھیلائے دا ڈیوائن میسج آف اسلام. ٹھیک ہے, اسلام کا جو الہامی میسج تھا یعنی جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا اس کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے شہر سفر کرنے کا فیصلہ کیا. He was mean that he is singular. ٹھیک ہے, past کی بات ہو رہی ہے اور the person is singular, that's why we use was over here. He was accompanied by Hazrat Zaid bin Haris. Look at the spelling, Harith, Harith, but this is not Harith. ٹھیک ہے, this is Haris. لیکن جو اولڈ انگلش تھا نا بہت پرانے زمانے میں, تو اس ٹائم میں یہ ایسے لکھا جاتا تھا. That's why یہ ابھی تک چینج نہیں ہوا. زید بن کا مطلب ہے کہ زید جو تھا وہ حارث کا بیٹا تھا. زید بن حارث یعنی زید جو ہے حارث کا بیٹا تھا. اکمپنیڈ کا مطلب ہے ہمراہ جانا, کسی کا ساتھ دینا. ان کے ہمراہ یا ان کے ساتھ حضرت زید بن حارث سفر کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed in Taif for 10 days. Keep that in your mind. For how many days? For 10 days, right? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا. Stayed کا مطلب ہے قیام کرنا, رکنا. During this period یعنی اسی دوران, کس دوران؟ During these 10 days, right? During this period, he invited tribal chiefs to embrace Islam, but they rejected his message and mocked him. During this period, اسی دوران, he invited, انہوں نے دعوت دی, invited دعوت دی, ٹرائبل چیفز جو قبیلے کے سردار تھے. پرانے زمانے میں قبیلے ہوتے تھے اور ہر ایک قبیلے کا اپنا ایک سردار ہوتا تھا, تو وہ جو فیصلہ کرتا تھا پورے لوگ جو تھے اس کو فالو کرتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا, انہوں نے جو ٹرائبل چیفز تھے, جو قبیلے کے سرداران تھے, ان کو دعوت دی ٹو ایمبریس, کہ قبول کر لے اسلام کو, یعنی اللہ کی دین کو قبول کر لے. بٹ they rejected انکار, ریفیوز, ریجیکٹ کرنا. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے انکار کی کس چیز سے؟ his message, ان کے پیغام کو, یعنی ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کی. and mocked him, mocked کا مطلب ہے making fun of someone, یعنی کسی کا مذاق اڑانا. and mocked him, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کہ انہوں نے جو ٹرائبل چیفز تھے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام کو قبول کر لے, but they rejected, لیکن انہوں نے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اور اس دعوت کی مذاق اڑانے لگے. ون ڈے, ایک دن. موب کا مطلب ہے لوگوں کا ایک ہجوم. ٹھیک ہے, یعنی گروپ آف پیپل. A mob pelted him with pebbles. Pelted is a past form of peel. اس کا مطلب ہے کسی پہ پتھر برسانا, کسی پہ یعنی گولے برسانا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے.
One day a mob pelted him with pebbles. एक दिन लोगों के एक हुजूम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए. Pebbles means छोटे छोटे कंकरियां जो होती है, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, राइट. Injuring him, इंजरिंग का मतलब है जख्मी करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया. Despite his injuries, despite his injuries यानी अपने जख्मों के बजाय, despite his injuries के बजाय, his उसके, injuries जख्म, अपने जख्मों के बजाय यानी उसको इग्नोर करके, ठीक है. He prayed for them. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की. ठीक है. आप लोगों ने वो एक कहानी सुनी है कि एक बार जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए जाते थे सुबह के वक्त, तो एक काफिर औरत थी, वो हर रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो गंद है, कूड़ा क्रिकेट है, वो रोज फेंकती थी. तो 2-3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए, लेकिन उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी और उसके घर तशरीफ ले गए, तो पता चला कि औरत बीमार है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अयादत की और उसकी शिफा के लिए अल्लाह ताला से दुआ की. ठीक है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे इंतहाई नरम मिजाज थे. वो हर किसी के साथ नरमी का बर्ताव करते थे, हर किसी को दरगुजर करते थे, हर एक चीज को, हर एक बंदे को, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, नरमी का सलूक करते थे और उनको माफ करते थे. अच्छा, come toward the reading. Then an angel. Angel mean farishta, a holy spirit. Then an angel appeared before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and sought his permission to destroy the city of Taif by crushing the mountains surrounding the city. Then फिर an angel, एक फरिश्ता, appeared, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश आया. अपीयर्ड की मीनिंग है नमूदार होने, यानी जाहिर आना. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश आए. बिफोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने. ठीक है. एंड साउ, और मांगा क्या, हिज परमिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत. किस चीज के लिए मांगी? टू डिस्ट्रॉय, के तबाह करे. डिस्ट्रॉय, तबाह करना. द सिटी ऑफ ताइफ, ताइफ के शहर को. बाय क्रशिंग, क्रशिंग का मतलब है दो चीजों को आपस में रगड़ना, यानी दो चीजों को आपस में मिला कि उसको रगड़ना. द माउंटेन्स, पहाड़ों को. सराउंडिंग द सिटी, जो सिटी के इर्द गिर्द थे. फिर एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहर के गिर्द पहाड़ों को कुचलकर ताइफ शहर को तबाह करने की इजाजत तलब की, यानी इजाजत मांगी. राइट बच्चे, आर यू लिसनिंग मी? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who comes as a blessing for the whole universe, prayed to Allah and said. Mob की मीनिंग है a group of people, लोगों का एक हुजूम, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं. राइट. ओके. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who comes as a blessing for the whole universe, prayed to Allah and said. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, ने अल्लाह ताला से दुआ की.
किस चीज के लिए दुआ की? फॉर द होल यूनिवर्स का मतलब है पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग रहमत बनकर आए. ओ अल्लाह, guide the people of Taif to the right path. ए अल्लाह, अहले ताइफ को राह हक की तरफ रहनुमाई फरमाए. ए अल्लाह, अहले ताइफ को राह हक की तरफ रहनुमाई फरमाए. राह हक का मतलब है यानी इनको सीधा रास्ता दिखाए, इनको अपनी इस्लाम की दावत कबूल करने की तौफीक अता फरमाए. Though they have not accepted Islam, अगरचे इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, यानी आपका दीन कबूल नहीं किया. एक्सेप्टेड कबूल करना. दो अगरचे. आई होप की मीनिंग है उम्मीद. आई होप मुझे उम्मीद है that their children will definitely accept the divine faith. मुझे उम्मीद है कि इनकी औलाद रज़ाए इलाही को जरूर कबूल करेंगे. डिवाइन फेथ, रज़ाए इलाही यानी अल्लाह ताला को राजी करने का जो अमल होता है, ठीक है, उसको कहते हैं डिवाइन फेथ, रज़ाए इलाही. डेफिनेटली यकीनन. Moving towards the last paragraph, that is, he always spread the message of love and peace. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा प्यार, मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाया. स्प्रेड फैलाना, मैसेज पैगाम, लव प्यार, पीस अमन. वो लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते थे, हर किसी को प्यार और मोहब्बत से रहने की तलकीन करते थे. नो मैटर हाउ हार्ड द situations, look at here, this is not a single situation, this is situations. हालत नहीं, हालात, ठीक है, that's why we use were here. How hard the situations were, he neither lost his patience nor scolded तंग करना, his enemies. हालात चाहे कितनी ही सख्त क्यों ना थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो अपना सब्र खत्म किया, यानी हमेशा साबिर रहे, और ना ही अपने दुश्मनों को डांटा, यानी ना ही उनसे कभी तंग हुए और ना उनको कभी डांटा. राइट. The teaching and life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam are examples of patience for entire mankind to follow. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और जिंदगी पूरी बेनू इंसान के लिए सब्र की मिसाल है कि वो उस पे अमल करे. ठीक है. अच्छा बच्चे, अब आप लोग जरा मीनिंग्स की तरफ देख ले. हमारा यूनिट जो है उसकी रीडिंग फिनिश हो गई. मीनिंग्स की तरफ देख ले, ठीक है, और इससे अपने लिए स्क्रीनशॉट्स ले ले, क्योंकि क्लास का टाइम फिनिश होने वाला है. आप लोग बाद में फिर ये अपने साथ नोट कर लेंगे. राइट. अच्छा, the first one word is traits and its English meaning is features. Urdu meaning is khususiyat, imtiyazi was. The second one is particular. Urdu meaning is khas, mahsoos, and English meaning is specific. Third one is justifying, jawaz pesh karna. English meaning is reason, explanation. The fourth one is inspiration, mutasir karna, impress. बच्चे स्क्रीनशॉट्स लेते जाए. अच्छा. The fifth one is role model, misali shakhsiyat, a person who someone admires. The sixth one is consequences. How to pronounce consequences?
right? Nataij, anjam, a result or effect. The seventh one is accompanied. Accompanied. Saath ana, hamra ana, to go along with someone. At one is preaching, tabligh karna, deliver a religious speech. Religious mean dini, ठीक है? Ninth, scared, खौफजदा, डरा हुआ. Fearful, frightened. 10th, embrace, कबूल करना, accept. 11th, mocked, मजाक उड़ाना, तंज करना, tease, laughed at. Divine faith, ilahi iman, believe in God. 13 is mankind, बनिनु इंसान, human being. ठीक है? अच्छा बच्चे, inshallah next week we will continue our written work of this unit, and note down your today's homework. Learn and do written practice of words meaning. You have to learn both the Urdu and English meanings also. Take great care of yourself and stay blessed. Goodbye.